Morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can anyone let me know what is eigenvalue and eigenvector? I know we are meeting after so long, but we have to cope up with the course, so undoubtedly I have to start directly. So can anyone let me know what is eigenvalue and eigenvector? Then I'll let you know where we have to use it for data science. Yes, anyone? Okay, everybody go understand the terminologies like linear independent and linearly dependent variables. ये तो सबको clear हो चुका है ना? Yes, class. Just let me know. First years I am audible ना? Yes, ma'am. हाँ, so I am just asking कि linearly independent and linearly dependent variables, is it clear to everyone? By now, at least this much concept of linear independent and dependence is should be clear to everyone. I'm not asking about what exactly identity matrix is या फिर rank क्या है या फिर determinant कैसे निकाला जाता है. But at least ये जो दो concept हैं linearly dependent and independent, it is clear to everyone. I assume that. So this is the first thing that you should understand for the data science, that there is something called as variables or features that are actually linearly independent and dependent one. Now let's talk about, we had before there was a lockdown and break from the classes, we had talked about linear algebra, in which we covered only the matrices part, where we calculated why we require matrices, what is a vector, why we require matrices, why the matrix calculations are there, and how to calculate A inverse. Till this point we had covered. So now there is something more important to the data science, that is eigenvalues and eigenvector. Why we require matrices? I hope ये सबको clear हो चुका है. Is it clear to everyone why we require matrices? Yes, class. Anyone? Anyone has doubt on this question? I can answer right now, because afterwards, if I'll ask you and you are saying ki you don't know, then there is a problem. So we require matrices for the data representation. This much we are very much clear, because we have to load the data in a format of a Excel or JSON or CSV file. So उसमें हमारा जो format होता है, that is rows and column. That's the only reason we are using our matrices. So algebra is very much required. So anyone can let me know what we mean by eigenvalue and eigenvector? Very important concept. No one? Okay. Uh, can anyone let me know what is this principal component analysis written over here? Class, I need an interactive class. So it is very difficult for me every now and then that I should switch on your chat window. So simply let me know either in yes or no ki do you have you ever heard about principal component analysis, eigenvalue, eigenvector? Because I know you all people have gone for eigenvalues and eigenvector. 12th में सबने matrices पढ़ा है. अब वो इतना डिटेल में पढ़ा या नहीं पढ़ा, that I don't know, but still I just want to know whether you people are aware of what is principal component analysis and what are eigenvalues and eigenvector. Please at least answer. No, ma'am. Okay. Anyone else? Stats people you might be aware of. हाँ जी. Stats वाले हैं यहाँ पर, उनको पता होगा.
Okay. I just need to know what is this picture actually representing you? Don't go for the written material. Just let me know what exactly this picture is representing you. Yes, first years, Mama Tiger. or tiger. Tiger. Okay. Anyone else? Yes, class. Anyone else? Wildlife. Okay. Anything else? हम्म वहां पर टाइगर था। यहाँ पर क्या है? Flowers. Flowers. How are you people defining that it is a flower? Ma'am, everything else is. Ma'am, only the flowers are there in the focus. But how are you saying that they are flowers? And by looking at them, Because we they can. By looking at petals. them, prior knowledge. Petals. So you don't have any notification notions about how a flower looks like? When we do Petals. have. Ma'am, we have like it They has have petals, petals, sepals, colorful. anthers. So these are something very principal and component. Basically, you are identifying a figure or an image by some components. Yes or no? Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. So by looking at a simple let you do can anyone let me know what this flower is being called as? Blue one? This one. Can anyone tell me what is the name of this flower? No. Okay. This one? Can anyone let me know what this flower is? What is the name of this flower? Don't see what exactly it is being written. Just you yourself tell me whether you are aware of the name of this flower or not. Yes or no? No. No, ma'am. No, we are not aware of. But by looking at it, by identifying some certain important feature, we get to know that this is a flower representation or it is a flower. Okay. Yes, ma'am. So there are certain features rather than now calling it as a feature, I'll rename it as there are certain important components that actually let us know what exactly the thing is. Over here also, when I showed you this figure, so you simply said that it is a tiger. Is there any other information that we are getting from this particular image? That is simple, that it is showing us a wildlife. But majorly it is focusing on a tiger. Now, how you are defining it to be a tiger? Yes, can Ma'am, anyone? the body structure, Okay, and the Black. physical appearance. physical Yes. appearance. What exactly the physical appearance? The face is there. The The black stripes. the stripes are there. The color of the body is there. The black stripe over it is the significant feature. Ma'am, Uh, the body shape. body shape. And अगर मैं इसको physically देखती तो definitely the size of the tiger. Agreed? Yes, ma'am. Fine. Yes, Now ma'am. these are actually the principal thing that are actually making me understand what exactly a tiger looks like. So it is basically called as, now we are not going into all the consideration. I'm not saying ki, okay, by looking at its eyes, I got to know it is a tiger. By looking at its spokes, I got to know it is a tiger. By just looking at its tail, I got to know it is a tiger. No, they are not very much keen important feature. What are the important feature? The body structure, the stripes, the color of the body, the leg, the size. They are the principal component. They are the important feature that are actually adding to the system that simply identifies that this is a tiger. Fine. I can't only say, okay, by looking at the stripes, I got to know that this is a tiger because even zebra has stripes. But the color of the body is different. It is having white along with black stripe. Black stripe. It is not having white and black. So there are certain principal components that are being used. So
why we require eigenvalues and eigenvector? Because we require our analysis, our system to identify certain things on some principal components, some important features. There we require eigenvalues and eigenvector. Now, since we are going to learn about data science, so data science is not only the analysis part of data. Now, data can be anything. It can be in a form of your digits. It can be in a alphabetical order. It can be your images. So wherever we are working on the images, we require our matrices to be calculated in terms of eigenvalue and eigenvector. यहाँ तक समझ में आ गया कि why we require eigenvalue and eigenvector? Yes or no, class? Ma'am, could you repeat the eigen part of the of I what you just just said? I just said that we require eigenvalue and eigenvector at a place where we have to identify some key important features. Okay, And ma'am. okay, so in simple words, it is being stated over here that the concept of eigenvalue and eigenvector are used to determine a set of important variables. Bracket mein there is something written as in form of vector. So we require a vector as a important variable where important features are being highlighted. So that is in the form of a vector. So this vector is being called as eigenvector along with scale, uh, uh, along different dimension that are basically called as your eigenvalues. So what exactly we mean by along with scale, along with different dimension? Now I have a tiger. It could be according to the age of the tiger, I can simply define the size of the tiger. Fine. So I have different scales. Every stripe is being in a different manner placed in the body on the body of the tiger. So now different scales हर पैरामीटर के लिए हर स्पेसिफिक या प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए या important feature के लिए there is different amount of scaling being done. That scaling is basically called as eigenvalues and the important variable identification is being done by the eigenvector. यहाँ तक समझ में आ गया? What exactly we mean by eigenvalue and eigenvector in terms of your image? Why we require eigenvalue and eigenvector? Because we have to do certain analysis based on the images. So there we can't just work on the numbers. We require first image data to be taken in the form of the numbers. I can't go this. मैं इस image को directly analysis नहीं कर सकती हूँ. मुझे इस image से information निकालनी पड़ेगी. वो information निकालने के लिए मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट में अपने डेटा को पहले लाना पड़ेगा. उस डेटा को लाने का जो तरीका है that is basically being done by the pixels and that basically the analysis is being done in the name of eigenvalue and eigenvector. Is it clear till this point? Class, yes or no? Yes, ma'am. Ma'am, yes. Ma'am, just the point along with scale along different dimensions, what is that supposed to अभी be? उसी पर आ That's रही हूँ. अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चलो. If there are features, the features can be scaled in different dimension or different direction. अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चलो. अभी जैसे आगे आगे बढ़ूंगी वैसे वैसे समझ में आ जाएगा. Scaling का मतलब क्या होता है? If I'll say I have a variable x, that is my eigen variable. Eigen vector आ गया मेरे पास. Now the value of that x can be scaled in different direction. It can be in positive direction. It can be in negative direction. It can be in the same direction as the original direction was there. It can be in opposite direction. Now the scaling will be done by a factor. Now that scaling factor can be any scalar. Half, it can be multiple of 2, it can be multiple of 3, it can be in a fraction point. That is basically called as scaled. And dimensions are in any of the direction. यहाँ तक समझ में आया? yes, ma'am. Okay. So till this point, what is eigenvalue? In general term हम लोगों ने समझा. Why we require eigenvalue? So there is a analysis basically called as principal component analysis जिसे हम कहते हैं PCA, very well known analysis
and it is basically done on the specific features. So जैसे अगर मुझे किसी डेटा सेट पे काम करना है जो कि फ्लावर्स की कैटेगरी पे है, हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो फ्लावर्स की कैटेगरी पे है, so now we are working on a specific features of the flower, identification of that a specific flower on the basis of some specific features. So that is basically called as principal component analysis. Similarly, I have an image of this particular thing and I got to know that this is a tiger. So now this analysis comes under principal component analysis. So wherever I am going for some specific identification, now there will be not more number of features, there will be only 4 or 5 features. For example, to identify a flower, I require a petal length, petal size, sepal length, and sepal size. Baki color is a distinguishing feature. Color can be anything. I know that rose comes in 3, 4 colors. So that is not something very key feature. What is the key feature? That the size of the roses or rose of every type do matter. रेड कलर के रोज का अलग साइज रहेगा, उसके पेटल का साइज अलग रहेगा. सेम गोज फॉर योर व्हाइट कलर रोज. So the key important features are petal length, petal size, sepal length, and sepal size. So they are basically principal components. So principal component are these 4 features. So it is basically principal component. And doing analysis on these 4 features is basically called as the principal component analysis. So why we require it? So we have to go for the component part. So that there we require your eigenvalues and eigenvectors. So whenever we are defining a data set in a different dimension, we require eigenvalues and eigenvector. Fine class? Now, in real scenario, अगर कोई real world problem लेकर के identify करना है कि exactly what we mean by this, so there is something, the solution to the real world problem often depends upon the processing large volume of data. So just understand first word. By next week, you'll get to know what exactly we mean by this large volume. So just understand first V of the data science. Initially, there were 3 V's. I'm not covering it right now. I'll cover it after your linear algebra class gets over. So first V right now is your volume. So there initially there were first 3 V's. Now there are total 5 V's. So first V is volume. So just understand we have to process large volume of data. That means there are not just 100 entries or 200 entries. There are more number of entries. So we have to work on the real world problem where large processing of data has to be taken care of, and the dimensions are different. For some set of variables, I am having a values as 0 point something or 1 point something. For some set of variables, I am having a values like 1000, 10,000, 1200. So I have a large dimension of data. So this large dimension will be incorporating in terms of eigenvalues. For example, take the problem of predicting the stock price. Can anyone let me know what exactly we mean by stock price? Management, finance, stats. What is a stock price? What we mean by stock price? So basically, it is like सबने NSE सुना होगा, National Stock Exchange. तो Yes, ma'am. basically it is, अगर जब स्टॉक प्राइस का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं, उनके प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स में जाते हैं. तो स्टॉक प्राइस मींस शेयर्स आप परचेज करते हो, और अगर किसी सपोज फॉर एग्जांपल अमेजोन अगर हम स्टॉक देखें, तो वी ऑल नो कि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती जा रही है फॉर द पास्ट 2 इयर्स, या ऑनलाइन सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. तो अगर हमने किसी भी एक ऑनलाइन फ्रेंचाइज की शेयर्स के लिए अगर हम लोगों ने कुछ शेयर्स परचेज करे हुए हैं, तो रोज उनका कुछ ना कुछ स्टॉक अपर एज या लोअर एज पर जाता है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फेच द मनी. तो नाउ प्रिडिक्टिंग समथिंग फॉर स्टॉक इज अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. प्रिडिक्शन का मतलब, इफ आई से टुडे Amazon इज हैविंग मोर नंबर ऑफ सेल्स, तो जिन्होंने भी Amazon से के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, दे आर एट अ वेरी हायर, they will be getting a higher margin of profit. So can I say the same statement for another 2 weeks? This comes under the category of prediction. Now I have to go for the analysis. But the problem is the dimension is large, because I have to make sure for last 2 weeks also exactly what was the rate of Amazon's share
for last 2 weeks, and marginal differences are there. Dimensions are more. Maybe on Monday it was 4.2%. Maybe on Tuesday, and on Tuesday it comes out to be 10.2%. Now the dimension is very large. From 4.2 now it is 10.2. The dimension is very large. The difference between these two margins are very high. So this is something comes under the dimension. So we have to take care of it. Now doing this analysis and then predicting it is a real value problem. This is the real analytics. So various number of parameters, लेकिन specific parameters are dependent to predict this stock market. So we require a intensive research into this, and eigenvalue and eigenvector can be incorporated into it. So this is the normal example कहाँ पर हम इसे use और कर सकते हैं. Majorly eigenvalues and eigenvector are done for the feature extraction. Feature extraction का मतलब principal component analysis is part of it. That means जहां पर भी हमारे को image पर analysis करना है या image processing करना है, वहां पर हमारी eigenvalues and eigenvectors are being incorporated. तुम फिल्टर्स यूज करते हो, स्नैपचैट यूज करते हो, स्नैपचैट का पीछे का अगर सॉफ्टवेयर का एनालिसिस अगर तुम करोगे तो वहां पर सारा इमेज प्रोसेसिंग इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर. Fine. And principal component will be it is like I hope everybody use Snapchat. सब नहीं यूज करते, लेकिन सबको मेजरली सबको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली स्नैपचैट इज. Yes or no? Yes, ma'am. So Yes, we all ma'am. know that there are various Yes, ma'am. filters, and according to filters, do you exactly look like जितना clear image तुम्हारे Snapchat पे आता है उतना ही clear image तुम्हारे normal कैमरा वाले कैमरा से आता है? No, ma'am. अगर clarity से देखोगे, what exactly you can even check it out today. Take a photograph from your camera of the mobile and take a photograph from the same camera of your mobile using the app Snapchat. You will get to know the difference. And there will be a drastic difference. Why there is a difference? Because the eigenvalue and eigenvector of your camera, the processing done by your camera of the mobile without any filter or application is different. And using a filter and application, the eigenvalue or the image processing done by your camera is different. So there we require feature extraction. वहां पर खुद भी अगर देखते हो देख लेना. The size of your eyes get differ. The lens color of your eyes get differ. So this actually happens when you are using your filter. So there the image processing is done in a different manner. तरीका वही है जो normal camera से है, but the only factors are now certain parameters are being added. So principal component parameters are being added. So we require for the processing of an image, we require an eigenvalue and eigenvector. So eigenvalue and eigenvectors are basically the key to training computational efficient and high performance machine learning model for the image processing, जहां पर मुझे डेटा इन अ फॉर्म ऑफ इमेज मिल रहा है. वहां के लिए मुझे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है. Fine. So now identifying the eigenvalues and eigenvector, we require the matrix formation has to be there. So until unless there is no matrix, we can't go for eigenvalues and eigenvector. And now exactly the primary goal for the optimization efficiency, या फिर I should say computational efficiency. Now computational efficiency का मतलब क्या होता है? How much accuracy you are getting for your contrast. For example, if I'll show you a blurred image of something and I'll show you the actual image afterwards, before showing you the actual image, if I'll ask you a blurred, I'll show you a blurred image and I'll ask you what exactly the image is. You by looking at it, you actually tend to identify the image. You try to identify image, and to some extent, identify कर भी लेते हो. Fine. Now that depends on how much blurredness is being incorporated into the system. So for that thing, if you'll identify the accurate one, actual अगर image तुम blurred image से निकाल पाए हो, that is the highly efficient system. Computationally, the efficiency is being increased. So उस चीज के लिए we require the matrix algebra to be there. That means we require eigenvalues and eigenvectors to be incorporated along with the matrix algebra for the achievement of the accuracy of the data when we are processing the image. So कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है?
for your facial algorithm, face recognition. I hope sabne, I don't know whether you have used or not, but in today's generation mobile, everybody knows you can lock your code by facial expression of your face. Yes or no? Yes, ma'am. एप्पल Yes. आईफोन ज्यादातर लॉक उसी से होता है, अगर पता हो। सबसे पहले एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था फेस रिकग्निशन सिस्टम फॉर द मोबाइल। Fine. Then there came out to be another expression, finger expression, impression से आप अपने फोन को लॉक कर सकते हो। Again, finger impression या thumb impression is nothing but an image. और हर किसी का इमेज थंब इम्प्रेशन या फिंगर इम्प्रेशन से हम अपने फोन को लॉक नहीं कर सकते। इट इज स्पेसिफिक टू वन। नाउ दैट स्पेसिफिक इज बेसिकली प्रिंसिपल कंपोनेंट। सो वेर एवर द इमेज फेशियल रिकग्निशन या फिर इमेज कंप्रेशन की जरूरत होती है या इमेज प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, ब्रॉडर सेंस में वी सिंपली कॉल इट एज इमेज प्रोसेसिंग, we require an algorithm for that, and that algorithm works on the eigenvalues and eigenvector. Then is the designing communication system. For example, communication system सबके घर में obvious है आज की डेट में, not exactly for the companies only, but घर पे भी सीसीटीवी लगाया जाता है। yes or no? तो Yes, ma'am. सीसीटीवी लगाने का रीजन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन जो हो रहा है, क्या करते हो? सीसीटीवी अगर आप घर पे लगाते हो तो आप उसका सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल कर लेते हो, सो दैट यू कैन एक्चुअली बी एट एनी प्लेस एंड आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू अपने घर को थ्रू योर सीसीटीवी कैमरा आप इजीली इनकॉर्पोरेट करते हो। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। Now, this is part of a communication in the terms of digital image communication. So, for doing that type of communication, setup or designing, we require our eigenvalues and eigenvector. Because CCTV की जो image होगी, that depends on, अगर मैं उसे laptop पे देखती हूँ तो blurriness is there. If I'll see it on my mobile, the blurriness is not there. Why? Because the pixels on my mobile are in small in size, they are in strict format, the screen size is small, but on the laptop or any monitor, the pixel sizes are very large. तो वो blur हो जाते हैं थोड़े से at the corners. Fine. Then designing bridges. The bridges are not the bridges जो हमारे लिए from one way to another way के लिए जरूरी होता है. The bridges are for the communication system itself. For example, uh, today we can talk to each other on video call. पहले आईएमओ ने शुरू किया था वीडियो कॉलिंग, उसके बाद व्हाट्सएप ने शुरू किया, फिर व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम भी आना शुरू हुआ, उससे पहले मैसेंजर आया, मैसेंजर में भी फेसबुक ने फिर एप्लीकेशन शुरू किया, फिर उससे पहले मेल्स पर आपकी वीडियो चैटिंग शुरू हुई। So this is the chain of series. Now this is actually basically called as bridges. So this bridges is being done by done by your matrices, eigenvalues and eigenvector, because images are being used now. So फिर WhatsApp के बाद टेलीग्राम आया, टेलीग्राम के बाद WeChat, हाइक, ये सब आना शुरू। सबके पास अब एक फीचर आ चुका है that you can call. Initially there was a feature that you can call, but now the video calling is being introduced. Initially you can go for a video call to one specific person. Now you can at least use at least 4 or 5 people on video call. तो नाउ दिस इज द गैप्स आर बीइंग कवर्ड। तो गैप्स को जो कवर करने के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली ब्रिजिंग। सो क्वांटम कंप्यूटिंग, वी ऑल नो टुडे इन टुडेज वर्ल्ड वी डू क्वांटम कंप्यूटिंग, फाइन। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यस, बिकॉज जहां पर भी हमारे प्रोसेसिंग आती है, फॉर एग्जाम्पल एंटीना सिस्टम्स आता है, तो उनकी इमेजेस को कैप्चर करने के लिए वी रिक्वायर आर इमेजेस। तो उन इमेजेस पर काम करने के लिए अगेन इमेज प्रोसेसिंग, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। So technically, for the cases where we have to use, we get to know from this point. Why we have to use eigenvalues and eigenvector, we got to know. But now, mathematically, or in terms of matrix, what is eigenvalue and eigenvector, we get to know from here. Ma'am, may I ask you something? क्या बेटा? Ma'am, like we use Instagram, so there are filters which tells what is your age Hmm. and all that Hmm. stuff. So, Hmm. ma'am, in that case also they use eigenvalues and vectors Yes, to yes, identify. yes, yes.
Ma'am, but most of the time they end up being wrong. So does that mean that the coding isn't in a like uh, in a That proficient that manner, that is or it's no. That depend on how accurately you are posing yourself. That oh, depends on okay. how accurately or how your pixels are taking your image, and then it is processing. Okay, अच्छा ma'am. So, अच्छा ma'am, तुम what kind हाँ of definition do they give? Like, what are the principal components here? okay. Suppose if I take a image of my face. ऑब्वियस है आप अपनी अगर एज रिकग्निशन लेकर आना चाहते हो उस ऐप के थ्रू तो वो आपके इमेज में क्या चीज लेके चले ऑब्वियस है मेरे हैंड से तो नहीं आइडेंटिफाई करेगा मेरा फेशियल एक्सप्रेशन लेके चलेगा माय फेस हैज टू बी देयर सो नाउ व्हाट आर द की नोट्स और या की फीचर्स ऑफ माय फेस यू टेल मी यस क्लास आई नीड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरीवन व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ माय फेस टू आइडेंटिफाई Ma'am, eyes, nose, आईज नोज एंड face cut. Lips. फेस कट एंड Ma'am, could you please record the class? ओ बेटा क्लास शुरू होने से पहले ही बोल दिया अगर Sorry, ma'am. हाँ मैं एक्चुअली बिल्कुल भूल जाती हूँ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लीज मुझे कोई भी याद दिला देना कि रिकॉर्ड करना है क्लास ओके सो माय क्वेश्चन वाज कैन एनीवन लेट मी नो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन क्या होंगे हाउ वुड आई दैट पर्टिकुलर ऐप विल आइडेंटिफाई तो की Uh, फीचर्स वर द ma'am, I just wanted to say, ma'am, these key features are like common to everybody. So, how would that differ from one person to हाँ another? वहीं आ रही हूँ अब मैं वहीं आ रही हूँ बेटा द की फीचर्स आर नॉट जस्ट आईज okay the distance between my eyes are the key feature okay the shape of my nose the size of my forehead the shape of my lips and the size of my lips the shape of my chin the size or the broadness or the narrowness of my chin the face cut I mean from my ear to my chin what exactly the distance is the cheek distance from my ear to my nose what is the distance from my forehead till my eyes what is the distance these are the features so the key features are for you the key features are eyes nose lips forehead cheek chin but for the software the key features are the dimensions these are called as the dimension now simple है मेरी eyes के बीच में जो distance है definitely किसका नाम ले लें नियति की eyes के बीच का जो distance है नहीं होगा same true or false True. True. Fine. Yes, ma'am. Okay. Then my forehead and नियति का forehead का जो shape along with the distance from hairline till my eyebrows अगर मैं उस एरिया को काउंट करती हूँ तो उसका जो डायमेंशन है डेफिनेटली ब्रॉडनेस ऑफ फोरहेड वी ऑल नो दैट किसी का ब्रॉड होता है किसी का नैरो होता है वी नो दैट ना तो डेफिनेटली वो भी बहुत डिफर करेगा यस और नो Yes, ma'am. तो Yes, अब ma'am. बताओगे अब यू टेल मी मैंने तो अपने एल्गोरिथम को जब लर्न कराया तो मैंने तो उसे डायमेंशन दिया कि 4.5 से लेकर के 6.5 अगर ब्रॉडनेस है तो उसकी एज लिमिट इतनी होनी चाहिए अब मेरा फोरहेड अगर 3.5 आ रहा है तो वो मुझे एरर देगा या मेरी एक्यूरेसी गलत बताएगा चलो Ma'am, accuracy गलत है तो मेरा एज एज चेंज आएगा या नहीं आएगा शायद। Oh my God. Yes, इसी ma'am. वजह तो दिस इज द रीजन दैट वो जो आपके जो फिल्टर्स होते हैं वो जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं सेकेंड की नोट फीचर बताती हूँ आज ही जाके चेक करना टेक द फोटोग्राफ फ्रॉम योर कैमरा एंड अपने कैमरा के अकॉर्डिंग शार्पनेस देखना और यही सेम चीज फिल्टर यूज करके देखना स्नैपचैट को यूज करके देखना नाउ द शार्पनेस की बात कर रही हूँ शार्पनेस का मतलब
माय जॉ लाइन। सबसे पहला कीनोट फीचर तुम्हें वही दिखेगा, साइड पोज से लेना। तुम्हारी जॉ लाइन तुम्हारे नॉर्मल कैमरा से बहुत क्लियरली विजिबल होगी, लेकिन अगर तुम स्नैपचैट यूज करके जॉ लाइन को लेने की कोशिश करोगे, मतलब साइड पोज लेने की कोशिश करोगे, तो यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन योर जॉ लाइन एंड योर नेक एरिया। बहुत क्लैरिटी से नहीं दिखता, बिल्कुल रनिंग दिखाई देता है, वो शार्प एजेस नहीं दिखते हैं। आई होप एजेस का मतलब सबको क्लियर हो रहा होगा ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. It's kind of smooth. एग्जैक्टली। सो इट इज लाइक, इफ आई से ऐसे दिखना चाहिए, बट अगर मैं फिल्टर यूज करूंगी, अगर मैं विदाउट फिल्टर यूज करूंगी तो मुझे ये शार्पनेस दिखेगी। लेकिन अगर मैं फिल्टर यूज नहीं करूंगी तो मुझे शार्पनेस दिख तो रही होगी, लेकिन वो शार्पनेस मर्ज हो रही होगी। चेक करके देख लेना। बिकॉज हम फिल्टर, अपर फिल्टर क्या हो रहा है, हम फिल्टर कहाँ लगाते हैं? फिल्टर हम एक इमेज के ऊपर फिल्टर लगा रहे हैं। दैट मीन्स दैट फिल्टर इज हैविंग इट्स ओन एक्सप्रेशन, और वो मेरी खुद की फोटो के ऊपर इम्प्रिंट हो रही है। ओके, तो इसीलिए फिल्टर जब यूज करते हो तो शार्पनेस बहुत क्लियर नहीं होता है। लेकिन जो फिल्टर तुम्हारे कैमरा के साथ आया हुआ है उसको यूज करते हो तो वो फिल्टर बहुत बेटर क्वालिटी देता है। दैट्स द डिफरेंस। ओके, यहां तक क्लियर हुआ क्लास? एनी डाउट? चल आई प्रोसीड? Yes, ma'am. Okay. So eigenvectors are the vectors which when multiplied by a matrix. Now it is in terms of the mathematics. Okay. Eigenvectors are the vectors which when multiplied by a matrix results in another vector having same direction. Mind it, having same direction, but scaled in forward or reverse direction by a magnitude of the scalar multiple which can be termed as eigen value. So एक definition के अंदर दोनों चीजें बोली गई हैं। आइगन वेक्टर क्या है? आइगन वेक्टर इज बेसिकली अ वेक्टर जो कि किसी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक नया वेक्टर देगा। So everybody understand, if a vector is being multiplied by a matrix, it will give you a vector itself. Let's talk about it और क्लियर हो जाएगा। So Uh, if I'll say there is a vector, let it be x, हम x को डिफाइन कर देते हैं as x and y। कौन बताएगा मुझे what is the order of this? What is the order of this? This is column vector na? I'm 2 into 1. 2 by It, 1. it is 2 by 1. So basically it is a column vector. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay. Ma'am. A, B, C and D. Okay, what is the order of this? 2 by 2. 2 by 2. 2. So now if I'll go for A multiplied by X, what will be the final response that I'll be getting? It is A, B, C and D. It is multiplied by X and Y. So I'll get something like AX plus BY and CX plus DY. Yes or no class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यही मिलेगा। अब मैंने तो लेकिन एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो मुझे क्या मिला? मुझे एक वेक्टर ही मिला। तो जस्ट अंडरस्टैंड, एक वेक्टर अगर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा जाए और एक नया वेक्टर मिल जाए, दैट इज आइगन वेक्टर। ठीक है, सो आई कैन सिंपली से दैट दिस फॉर्मेशन, दिस इज नथिंग बट माय आइगन वेक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट एड्स ऑन टू द सिस्टम? इट सिंपली सेज रिजल्ट इन अनदर वेक्टर। यहां तक क्लियर है? हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? इफ दिस, इसको अगर इस एक्स और वाई को अगर मैं प्लॉट करूं, या अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, माई न्यू वेक्टर जो क्रिएट हुआ है, लेट दिस बी एक्स डैश, ये वेक्टर जो क्रिएट हुआ है अगर इसकी भी डायरेक्शन सेम हो जो एक्स की है, या इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जो एक्स की है, इट कैन हैपन। एंड वो जो डायरेक्शन चेंज हो रही है या वो जो डायरेक्शन सेम है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, वो जो डायरेक्शन दैट इज बीइंग स्केल्ड बाय अ फैक्टर। स्केल का मतलब क्या हुआ? यहां पर हो गया, नाउ इनिशियली इट वाज x, now it is nothing but a of x. Initially it was y, now it is basically b of y. It is being scaled. So now actual x is being scaled by a factor a,
and y is being scaled by a factor b. Getting my point, class? Yes, ma'am, but the direction here is of x, y, right? Yeah. So the eigenvector is the अभी आ x रहे vector. हाँ अभी आ रहे हैं ठीक है यहां तक क्लियर हुआ yes or no till this Yes, point ma'am. it's clear to Yes, ma'am. everyone na ki exactly what we mean by vector and scale and direction. Now let's talk about the direction. uh, ये रिप्रेजेंटेशन सबको दिख रही है देयर इज एन एक्स ठीक है एंड Yes. आई एक्चुअली स्केल्ड मैं मल्टीप्लाई नहीं बोल रही हूं आई एम सेइंग आई एक्चुअली स्केल्ड बाय माय वेक्टर एक्स with a matrix A and I got another vector जो भी हमने निकाला था एक्चुअल वेक्टर क्या था एक्स वाई और नया वेक्टर क्या आ गया ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई अब हमने उन दोनों को प्लॉट किया आर दे इन द सेम डायरेक्शन और इन डिफरेंट डायरेक्शन सेम Same डायरेक्शन और direction. इन दे आर इन सेम डायरेक्शन आर दे हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मतलब सबको पता है ना Ma'am, they have different magnitude. they have different magnitude so original was x converted was और converted ना बोल के transformed was इसका सॉरी transformed is a times x फाइन इसका मतलब क्या हुआ जो जो x था जो ओरिजिनल था हमने उसको एक फैक्टर से स्केल कर दिया है नाउ वी आर गेटिंग समथिंग इन द सेम डायरेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आ रहे हैं सेम डायरेक्शन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मतलब एक ही डायरेक्शन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स नाउ दिस इज बेसिकली द डायमेंशन ऑफ माय पर्टिकुलर वेक्टर x एंड वॉट एवर आई विल गेट आफ्टर अब मैं इसको जिस फैक्टर से मैंने स्केल आउट किया है वो जो स्केलिंग करके मेरी वैल्यूज आ रही हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड एज आइगन वैल्यूज सो जो स्केलिंग होकर के आ रही है इस लाइन पर ये जो स्केलिंग हो रही है जितने वैल्यू से हो रही है ए बी सी डी के अकॉर्डिंग जितने वैल्यू से वो हो रही है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज आइगन वैल्यूज क्लियर हुआ क्लास आई नो थोड़ा सा टीडियस है रेज योर डाउट्स प्लीज डाउट रेज करोगे ऑटोमेटिकली क्लियर होगा Ma'am, the eigenvector or and eigenvalue is represented by A, right? Or X. आइगन वैल्यू इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय न्यू वेक्टर जो कि अब कैलकुलेट होकर के आएगा अभी हुआ नहीं है Oh, ओके अभी हुआ नहीं है वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय अ वेक्टर आइगन वेक्टर और आइगन वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है हमने अभी से वहीं तक बात करी है ठीक है जो हमने यहां तक बोला है टिल दिस पॉइंट so ma'am, the X part is giving us the direction, right? या एक्स पार्ट इज गिविंग अस द डायरेक्शन ठीक है नाउ दैट डजंट मीन वाई इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड जो मेरा उस मैट्रिक्स वेक्टर कॉलम वेक्टर के अंदर जो भी मेरे कंपोनेंट्स गिवन है फीचर्स लेबल्स जो गिवन है प्रिंसिपल कंपोनेंट गिवन है वेरिएबल्स जो गिवन है दे आर माय वेक्टर्स अभी अभी लिख के दिखाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा अभी यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ इतना बता दो ओके दिस इज माई एक्स यहाँ ये सबको दिख क्लियर है ना व्हाट इज दिस एक्स इट इज एक्स एंड वाई सो दे आर बेसिकली दी वेरिएबल्स so they are my eigenvector the value of whatever I will be getting for specific values after calculating my eigen values eigenvector that are basically called as eigenvalues जिसके लिए मैं निकाल पा रही हूँ अभी जब एग्जांपल दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अच्छा क्लास हम सब ने ये वाली इक्वेशन पढ़ी है ax is equal to b yes or no Yes, ma'am. where A is the matrix, X is the unknown variables, and B is the constants. Yes or no?
Yes, ma'am. And we used to calculate our A and B in such a manner that we get to know the values of our unknown variables that are being defined by the matrix X. X के अंदर अब अगर वो 2 क्रॉस 2, बेसिकली अगर उसमें 2 वेरिएबल्स हैं तो X और Y निकालेगा, अगर 3 वेरिएबल्स है तो X Y Z निकालेगा, अगर उसमें 4 वेरिएबल्स है तो W X Y Z निकालेगा. ऐसा ही कुछ था, हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है. Yes or no? Yes, ma'am. So now this X is nothing but is basically my eigenvector. ठीक है, दिस इज माई आइगन वेक्टर. दिस वैल्यू यहाँ पे जो मेरी एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी या एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आएंगी और उसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिख रही हूं देन इट इज बेसिकली माई आइगन वेक्टर. और ये जो वेक्टर जिस वैल्यू के लिए आएगा वो वैल्यू मेरी आइगन वैल्यू कही जाएगी. अभी बताऊंगी वो वैल्यू क्या है जिसके अकॉर्डिंग वो स्केल हो रहा है. Means if I'll solve these equations ax plus by and cx plus dy, अगर मैं इनको solve करूंगी, इसको solve करने के बाद I'll have a response, I'll get some values. That values are being called as eigenvalues, जिसके अकॉर्डिंग मेरा जो नया वेक्टर बना है वो स्केल हुआ है. स्केल का मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअली में था x, नाउ इट इज बीइंग एज x डैश. अभी तक x था, अब ax हो गया है. तो ओवर हेयर दिस इज माई एक्स जो कि ओरिजिनल फॉर्म में था. जितने फैक्टर से ये ट्रांसफॉर्म हुआ है दैट फैक्टर इज बीइंग कॉल्ड एज आइगन वैल्यू. गेटिंग माई पॉइंट क्लास? आई नो वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर को प्लॉट जब हम करते हैं वो तुम्हारे दिमाग में वो जा रहा है. आई नो दैट. डोंट टेक इट, जस्ट ओनली अंडरस्टैंड द वर्ड्स राइट नाउ. जब सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तभी समझ में आएगा, क्लियर होगा. अभी सिर्फ और सिर्फ टर्म्स को समझने की कोशिश करो. व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव अ वेक्टर दैट इज बीइंग कॉल्ड एज आइगन वेक्टर, जो कि करता क्या है, इफ इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स इट विल गिव यू अनदर वेक्टर, अ ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर. किस चीज से ट्रांसफॉर्म होगा, इट कैन हैव द सेम डायरेक्शन or opposite direction as the original vector has, and it is being scaled by a factor. That scaling of the factor is being called as eigenvalue. अभी सिर्फ इतना समझ लो, ये टर्म समझ में आ गई है क्लास? yes or no please let me know. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहां तक क्लियर हो गया है? सो नाउ यहां तक क्लियर होने का मतलब अब यहां तक हमें क्लियर है कि व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. सो आइगन वेक्टर बेसिकली वो वेक्टर है जो कि हमारे को ट्रांसफॉर्म वेक्टर दे रहा है आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय अ मैट्रिक्स, और जिसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है उनको हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब अगर ब्रॉडर सेंस में कहा जाए तो दे हैव, एवरी वेक्टर हैज अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पर जो हमारा आइगन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो हमें मल्टीप्लिकेशन की वजह से मिल रही है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो हमारे को उसकी आइगन वैल्यू से मिल रहा है. इसका मतलब जो स्केलिंग हो रही है दैट इज बीइंग डन बाय द आइगन वैल्यूज. सो राइटिंग एन आइगन इक्वेशन is being given by a format. I'll simply say I have something written as a x, where x is the unknown variables, a is the matrix, which is equal to some eigenvector multiplied by some eigenvalue multiplied by my eigenvector. eigenvector क्या है यहाँ पर, unknown matrix. नाउ बेसिकली क्या था, एक्चुअल में क्या था, मेरे पास x था, मैंने उसे मल्टीप्लाई किया विच गिव्स मी अ ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर विच इज रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ लैम्डा x. क्लियर हुआ क्लास? शैल आई रिपीट अगेन? फर्स्ट ईयर्स. मैम किसी मैट्रिक्स को जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो आइगन वेक्टर मिलेगा? हाँ. ओके. ठीक है, अब आई एम रिपीटिंग इट अगेन. सी, आई जस्ट सेड मैथमेटिकली if I'll have a multiplication of a vector with a matrix, I'll get another vector which is nothing but a eigenvalue multiplied by the eigenvector. ठीक है, now
एक्चुअली में करा क्या, मैंने a और x को मल्टीप्लाई करा और मैं एक ट्रांसफॉर्म चीज लेकर आई, जो कि मैंने क्या कहा, एक नया a x डैश मेंशन कर देते हैं इसे थोड़ी देर के लिए, x डैश विच इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्म वेक्टर, और जिस चीज से वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है दैट इज नथिंग बट दी लैम्डा. तो लैम्डा इज बेसिकली माई आइगन वैल्यू एंड x डैश इज नथिंग बट माई आइगन वेक्टर. क्लियर हुआ क्लास? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now, rather than writing it to be x dash, we simply write it as ax is equal to lambda x. Now, since it is being transformed, I'll simply do ax. I'll bring this lambda x on this LHS side. Now, x is common. So, we have a very bad habit of writing something because it is a value and a is matrix. So, I can't represent my a value with a matrix. So, I have to multiply it with an identity matrix like this. क्लियर हुआ क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि सी जस्ट अंडरस्टैंड, आइगन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आई हैव अ वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 0 1 2 3 4 5. अब मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, मैट्रिक्स के अंदर तो अगर स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मैट्रिक्स क्या हो सकता है, एक वेक्टर हो सकता है, सिर्फ एक एलिमेंट हो सकता है, या फिर 1 क्रॉस 2 हो सकता है, या 2 क्रॉस 1 हो सकता है. अब मैं उसमें से कोई एक वैल्यू थोड़ा ना माइनस कर सकती हूँ. आई कैन सब्ट्रैक्ट अ वेक्टर फ्रॉम अ वेक्टर, अ मैट्रिक्स फ्रॉम अ मैट्रिक्स, बट आई कांट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ मैट्रिक्स अ वैल्यू, एक वैल्यू नहीं माइनस कर सकती. सो व्हाट आई हैव टू गो फॉर, आई हैव टू गो गिव अ identity matrix over here. So basically my eigen equation is nothing but this, which is equal to a minus lambda I is equal to 0, which is basically called as eigen equation, from where we get the value of our lambda, which is nothing but eigenvalue. Eigenvalue is the value that actually scales my vector, which actually defines my eigen vector, transformed vector को जो लेकर आएगा, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस लैम्डा के अकॉर्डिंग होगी. यहां तक सबको क्लियर है? Ma'am, Yes, ma'am. the point that you are equating these two like with ax and is equals to lambda x. What is the point behind that? Like why are we equating it Because something? we said something like eigenvector is a vector that multiplies with a matrix, give a new vector. So this, when multiplied with a vector, matrix multiplied with a vector gives a new vector, which is nothing but a format of eigenvalue and eigenvector. So now this is basically giving me what? It is giving, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एक वैल्यू को, if I write it like this, ax is equal to 2 1 and 3, what I am getting, I guess नियति ने बोला ये आंसर क्वेश्चन. Ma'am, Khushi. खुशी, खुशी आंसर क्या होगा यहाँ पर, ax is equal to what, क्या हो जाएगी वैल्यूज, 2 and there is a column vector 1 and 3, what will be the value, can I write it to be as 2 and 6? Yes, ma'am. Now it is a vector. Yes, ma'am. So can I say that if I multiply a vector with a matrix, I am getting a value as 2 and 6? Yes, ma'am. This is what exactly we defined, कि multiplication of these two will give you a new vector, जो कि हमें यहाँ मिल चुका है. Now this new vector is called as eigenvector. But अब मैं इसको स्केल कर रही हूँ, स्केल किससे किया है मैंने? Yes, खुशी? Ma'am, 2 से. 2 से. Now this 2 is nothing but eigenvalue. So this is defining the magnitude of my vector. Vector क्या है यहाँ पर? 1 and 3. Yes, ma'am. ठीक है, so now my vector is being scaled by a factor 2, which is giving me the magnitude, and the direction is dependent on. अब ये डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, अगर मेरे पास x की ऑलरेडी कोई वैल्यू होगी, उसके साथ अगर मैं उसको कंपेयर करूं, प्लॉट करके देखूं, ये मेरी वैल्यू x है, ये मेरी वैल्यू y है, इफ आई प्लॉट इट अगेन, इफ आई गेट द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में अगर वो जा रहा है, तो आई सिंपली से कि yes they are in the same direction. If it is coming out in a different direction, I say they are opposite to each other. Magnitude is defined accordingly. Now this is being stretched, so I'll simply say it is being magnified by a factor of 2. किसको मैग्नीफाई किया है, ओरिजिनल वाले को मैंने 2 फैक्टर से
स्ट्रेच कर दिया है. दिस स्ट्रेचिंग इज बीइंग कॉल्ड एज स्केलिंग. Got it, ma'am. फाइन. Yes, क्लियर ma'am. है क्लास? यहां तक सबको क्लियर है? कल की क्लास में मैथमेटिकली करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा. आई नो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर एक्चुअली द टीडियस पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स. 2x2 तक बहुत आसान होगा, 3x3 पर भी काम करेंगे ना तो एक्चुअली में परेशान होंगे हम लोग. आई अंडरस्टैंड दैट, बट टेक योर टाइम. ये चीज क्लियर होनी चाहिए. यहां तक ये इक्वेशन तक पार्ट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. फाइन. Yes, ma'am. फाइन क्लास. विल बी मीटिंग टुमारो. अटेंडेंस प्लीज, मैं नहीं ले पाई हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना. फाइन. Yes, ma'am. Okay, ma'am. So we'll be meeting tomorrow now, and we'll do the Niyati. I'll share the notes today. ठीक है, मैं अभी गूगल क्लासरूम पे इसे शेयर कर रही हूँ. एक्सक्यूज मी मैम. ये हाँ विशाखा. मैम एक्चुअली वो क्लासरूम मैम अभी तक मेरा ज्वाइन नहीं हो पाया है. विशाखा मुझे पर्सनली मैसेज करोगे एक बार अपनी ईमेल आईडी? ओके मैम. ओके.